Hello students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today we shall start the second chapter of the book Indian Economic Development meant for class 11th. The second chapter is Indian Economy from 1950 to 1990. इससे पहले हमने इंडियन इकोनॉमी को पढ़ा. व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस हासिल करने के बाद उस वक़्त इंडियन इकोनॉमी जो थी उसकी कंडीशन क्या थी. व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ दैट इकोनॉमी ऑफ दैट टाइम. वी डिस्कस्ड दैट इन डिटेल in our first chapter. So today our second chapter is that is Indian economy from 1950 to 1990. यानी इस वाले पीरियड में ये जो 50 से 90 तक अब हम फ्री हैं. हमारा इंडिया जो है अपने हाथों में है. What happened in this period? What our planners did? What policies they adopted to make economy a fast growing economy. तो इस पे बात हो जाएगी. इसमें आप सबसे पहले हमें जिस चीज़ को जानना है वो ये है, every economy has three basic questions. Three basic questions. इन दुनिया में जो भी कोई इकोनॉमी है that has to answer three basic questions. What are these questions? Question number 1 है what to produce. What to produce? This is the first question that every economy has to answer. Second question, how to produce. How to produce. इन्हें जिस चीज़ को हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस दैट थिंग. अब उसको प्रोड्यूस कैसे किया जाएगा, ये सेकंड क्वेश्चन है. और थर्ड है फॉर whom टू प्रोड्यूस. फॉर whom टू प्रोड्यूस. किन के लिए, किस सेक्टर के लिए प्रोड्यूस किया जाएगा. तो दीज आर बेसिक 3 क्वेश्चंस जिसका हर इकोनॉमी को आंसर देना होता है. व्हाट टू प्रोड्यूस में यह देखा जाता है कि किस चीज़ को प्रोड्यूस किया जाएगा. व्हाट थिंग्स, व्हाट गुड्स एंड व्हाट सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी. इकोनॉमी में किस सर्विस को, किन चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाएगा, बनाया जाएगा. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन जो है दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस. हाउ टू प्रोड्यूस में यह देखा जाता है कि हमारी जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन होगी उसमें किस मेथड को अडॉप्ट किया जाएगा. एक मेथड होता है लेबर इंटेंसिव मेथड. labor intensive method. This is the one method. Labor intensive method. This is one method जिससे प्रोडक्शन को किया जाएगा. तो इसमें लेबर का फैक्टर ज़्यादा होगा. एक और मेथड है दैट इज नोन एज कैपिटल
intensive method. तो हाउ टू प्रोड्यूस में इकोनॉमी को चूज करना होता है कि लेबर इंटेंसिव मेथड को चूज करके प्रोडक्शन को किया जाएगा या कैपिटल इंटेंसिव मेथड को चूज करके प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उसको कंटिन्यू किया जाएगा। तो ये सेकंड बेसिक क्वेश्चन होता है जिसको इकोनॉमी में कंसिडर करके आंसर दिया जाता है। ठीक। थर्ड क्वेश्चन होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किन के लिए प्रोड्यूस किया जाएगा। जो हम प्रोड्यूस करेंगे इसको हम ये भी कह सकते हैं हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, यानी डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा। We know that there should be equity, there should be equal distribution of wealth in an economy. तब जाके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है वो बढ़ जाता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल ना होगी तो फिर ये वेल्थ जो होगी इट विल रिमेन इन फ्यू हैंड्स। तो अगर ये फ्यू हैंड्स में रह गई तो पूरा नेशन जो होता है, इकोनॉमी में रहने वाले जो सारे लोग होते हैं, दे विल नॉट बी गुड, दे कांट डू गुड। उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो होगी अगर डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी, तो लिहाजा थर्ड क्वेश्चन जो होता है वो है फॉर होम टू प्रोड्यूस, या हम यूं कह सकते हैं हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट। तो इंडिया आज़ाद होने के बाद हमारे जो लीडर्स थे, थिंकर्स थे, उनके सामने भी ये क्वेश्चंस थे। अब इन क्वेश्चंस का जो आंसर है, देयर आर मैनी इकोनॉमिक सिस्टम्स बाय विच दीज बेसिक क्वेश्चंस आर आंसर्ड। हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने भी उस वक़्त सोच समझ के एक मेथड को, एक इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया इन बेसिक क्वेश्चंस को आंसर के लिए। तो लेट अस सी फर्स्ट व्हाट इकोनॉमिक मॉडल्स और व्हाट इकोनॉमिक सिस्टम्स आर देयर बाय विच these basic questions are answered. Let us first see. The first economic system that is known as capitalist economic system. Capitalist economic system, this is the first system by which these questions are answered. ये जो सिस्टम आंसर देता है, दिस कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, व्हाट टू प्रोड्यूस। अच्छा, एक और चीज आप याद रखिए, इसको मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम आप याद रखिए या मार्केट इकोनॉमी आप याद रखिए, तो ये दोनों नाम हैं। तो ये सिस्टम आंसर कैसे करता है बेसिक क्वेश्चंस को, लेट अस सी। व्हाट टू प्रोड्यूस, द फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट टू प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम सेज आंसर्स दैट प्रोड्यूस दैट थिंग फॉर विच there is demand, for which there is demand in the market. Market has two main forces, demand and supply. So capitalist economy says that produce those things for which there is demand in the market. This is the answer for first question.
किस चीज़ को प्रोड्यूस किया जाएगा जिसकी डिमांड मार्केट में है, इज द आंसर गिवन बाय कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम. Second, how to produce? Shall we produce by labor intensive method, or should we produce by capital intensive method? This economic system says choose that method which is cheap. उस मेथड को अडॉप्ट कीजिए जो आपको सस्ता मिलता है, जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, उस मेथड को अडॉप्ट कीजिए. थर्ड क्वेश्चन, फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाएगी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम आंसर करता है उनके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा जिनके पास परचेजिंग पावर होगा, जिनके पास परचेजिंग पावर होगा, जो मार्केट में बाई कर सकते हैं. प्रोड्यूस फॉर दोज, यानी इसका रिवर्स ये है कि इफ देयर आर पुअर्स आल्सो, दे आल्सो नीड समथिंग बट दे डोंट हैव परचेजिंग पावर. सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम सेज डोंट प्रोड्यूस फॉर दोज, उनके लिए प्रोड्यूस मत कीजिए. सो दिस द फर्स्ट economic system that's known as capitalist economic system, and it answers all these basic questions in this way that we discuss. Let's move forward. Second, system जो है that's known as socialist economic system. Socialistic economic system भी इन basic questions का आंसर देता है. This also answers these questions. Now question number 1, what to produce? What to produce? Socialist economic system में सबसे ज़्यादा रोल जो प्ले करने वाला फैक्टर है दैट इज गवर्नमेंट. इन सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट. ऑल द 3 basic questions are answered by the government. Government decides what to produce. It is the choice of government, it is the thinking opinion of government what to produce. How to produce also choice of government, and for whom to produce that's also decided by this government in socialist economic system. इसमें प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती है. इन सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम देयर इज नो प्राइवेट ओनरशिप, देयर इज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. तो ये है दूसरा इकोनॉमिक सिस्टम जो आज भी दुनिया में एग्जिस्ट हो रहा है. दिस मॉडल इज nowadays also to some extent existing in China, in Cuba, etc. Third model, that is mixed economy. थर्ड मॉडल जो इकोनॉमी का है वो है मिक्सड इकोनॉमी. Now what is this mixed economy? It is that system which involves some factors of capitalist economic system and some factors of socialist economic system. कुछ फैक्टर्स इसमें से लिए गए और कुछ फैक्टर्स
सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम से लिए गए। ठीक, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। इन क्वेश्चंस का आंसर कुछ तो गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है और कुछ मार्केट के हवाले किया जाता है। सम part of work is done by the government and some part is given to the market, where market forces decide and determine the things. That model where government as well as market plays its role, that model is known as mixed economic system, and this is the only one system which is good system in economic terms. in economy में जिस मॉडल को अच्छा समझा जाता है, जो मॉडल दुनिया में ज़्यादा चलता भी है, that is mixed economic system. Now when we got the freedom, when India was freed, our leaders, they had to decide which system should be adopted for the country like India, which was under subjugation, which was under foreign control for about 200 years. So this was a big question, and big debates were done on the question. So finally Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, and other leaders, they adopted this third system that's known as mixed economy, in which some factors of capitalistic economy and some factors of socialistic economy were taken, were adopted. Mixed economic system. इसको अडॉप्ट करने के बाद जब इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, अब हमने देखा मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम, मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम, इसको जो अडॉप्ट किया गया तो 1950 में सबसे पहले पोलानी कमीशन को बनाया गया। पोलानी कमीशन, it was 1950 when Polanyi commission was made by the Indian leaders. 1950 में ये पोलानी कमीशन आप जानते हैं 1950 से पोलानी कमीशन ने काम किया इकोनॉमी के लिए, लेकिन 2014 में आप जानते हैं दिस हैज़ बीन डिसॉल्व्ड। 2014 में पोलानी कमीशन को डिसॉल्व किया गया और नीति आयोग, this was introduced, नीति नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 1 January, it was 1 January, yes, 1 January 2015 when this was introduced with the chairmanship of Prime Minister of India. तो तब से नीति आयोग का काम कर रहा है, पोलानी कमीशन को डिसॉल्व किया गया। तो चलिए, ये इसमें एक और चीज़ ऐड करना था, लेकिन जब 1950 में पोलानी कमीशन को बनाया गया
तो 5-year प्लानिंग, 5-year plans in India were started. 5-year plans, ये 5-year plan जो था, it was taken from the सोवियत यूनियन मॉडल, वहाँ से उसको बारो किया गया, रशिया से इसको बारो किया गया, चूँकि सोवियत यूनियन में ही सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था। हमने अभी इसको पढ़ा कि हमने जो मिक्सड इकोनॉमी का सिस्टम अडॉप्ट किया, देयर वर सम फैक्टर्स फ्रॉम सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड सम फैक्टर्स ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। लिहाजा ये जो 5-year प्लानिंग की गई, इट वाज टेकन फ्रॉम सोशलिस्टिक इकोनॉमी, फ्रॉम सोवियत यूनियन। तो प्लानिंग कमीशन से 5-year प्लानिंग इंडिया में स्टार्ट हुई। द फर्स्ट वन वाज फ्रॉम 1951 to 1956. This was first 5-year plan. सबसे पहला फर्स्ट 5-year प्लान जो था, that was 1951 to 1956. ठीक। Now what is plan? First of all, we must know what is plan. Plan होता क्या चीज़ है? You should know it. Plan is nothing. Plan simply spells out how the resources of a country should be used. रिसोर्सेज को, अवेलेबल रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया जाएगा to get optimum level of, maximum level of satisfaction. That's plan, nothing more. So it spells out, it says, it suggests the ways how to use limited resources of a country to get, to obtain, to have maximum level of satisfaction. That's plan. And plan has two types of goals: general goals and specific goals. प्लान में कुछ गोल्स होते हैं जिनको जनरल गोल्स कहा जाता है, और कुछ गोल्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, जो टाइम स्पेसिफाइड होते हैं कि इतने टाइम में यह वाला ऑब्जेक्टिव, यह वाला गोल हमें हासिल होना चाहिए, 2 साल में यह कुछ होना चाहिए, 3 साल में यह होना चाहिए। तो दीज आर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, और कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अगर प्लान विद जनरल ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग टर्म का होगा तो फिर उस प्लान को पर्सपेक्टिव प्लान इन इकोनॉमिक्स कहा जाता है। पर्सपेक्टिव प्लान, सो सिंपली पर्सपेक्टिव प्लान मीन्स लॉन्ग टर्म प्लान विद जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये प्लान होता है। तो इस प्लानिंग कमीशन को हमारे इंडिया में 1950 में बनाया गया, और इसके बनने से इंडिया में क्या हुआ, 5-year plans स्टार्ट हुई। द फर्स्ट वन स्टार्टेड फ्रॉम 1951 to 1956. सिमिलरली these plans were made onwards. कुल मिलाकर जो प्लान्स, ये 5-year प्लान्स हमारे इंडिया में बनाए गए या हुए, these were 12 5-year plans. Total 5-year plans were 12. Last one, that was from 2012 to 2017. उसके बाद इस 5-year प्लानिंग को भी डिसॉल्व किया गया है। सो एट प्रेजेंट वी डोंट हैव 5-year प्लानिंग एक्सेप्ट इन डिफेंस। डिफेंस में अभी इसको कंटिन्यू किया गया है। डिफेंस में 13th 5-year प्लान 2017 से 2020
2022 तक चल रहा था. This was the 13th 5-year plan only in defense. तो बाकी 12th जो 5-year plan था, it was from 2012 to 2017. After that it has been dissolved. तो ये था प्लानिंग कमीशन और 5-year plans which was done or adopted by the thinkers, by the economists after independence. Now let's move onwards. Now the question is, what were the goals? जनरल गोल्स क्या थे? ये जो 5-year plans हमारे बन गए, what were the goals? क्या गोल थिंकर्स ने, इकोनॉमिस्ट्स ने इनके पीछे रखे थे? There were 4 main goals which we have to now learn. 4 primary goals of planning. Number 1, growth. Number 2, modernization. ठीक, पहला गोल ग्रोथ था, सेकंड गोल जो था दैट वाज मॉडर्नाइजेशन, एंड द थर्ड गोल वाज self reliance, fourth was equity. These were the 4 goals of 5-year planning. 1950 से 1990 तक 7 5-year planning 5-year plans हो गई. इन 7 5-year plans जो थे, इनमें क्या हुआ? चलो पहले हम इस पर बात करते हैं. सबसे पहले ग्रोथ. सबसे पहले ग्रोथ. ग्रोथ क्या चीज है? व्हाट्स ग्रोथ? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्रोथ? इट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव. ये हमारा पहला गोल है, लेकिन ग्रोथ है क्या चीज? वेरी सिंपल. इट इज सिंपली capacity to produce goods and services. There should be increase in capacity to produce goods and services. This was the first objective, first goal. यानी हमारी जो लेवल है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने की, हमारी जो कैपेसिटी है दैट शुड इंक्रीज, वो बढ़नी चाहिए. दैट्स ग्रोथ. जब गुड्स बढ़ेंगे, जब सर्विसेज बढ़ जाएंगे, तो तब ये कहा जाएगा कि देयर इज इकोनॉमिक ग्रोथ. इसके लिए नंबर 1, stock of productive capital. Stock of productive capital जो है it should increase. अगर ये increase होगा, productive capital increase होगा, then we can say it's economic growth. अगर ये increase नहीं होगा तो फिर supportive service size of supportive service, जो supportive service हुआ करती है, फॉर एग्जांपल बैंकिंग सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट है, अदर सर्विसेज है, जो सपोर्टिव सर्विस है, उनका जो साइज है दैट शुड इंक्रीज. इफ देयर इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ सपोर्टिव services, we can say this is economic growth. There should be
efficiency. There should be increase in efficiency. Efficiency में increase होना चाहिए. किस efficiency में? ये जो ये है productive capital या supportive service. Productive capital की जो efficiency है, there should be increase in that efficiency, and supportive services जो हुआ करती है, there should be increase in efficiency of supportive services. This is also growth. So these are the aspects how we can see is there growth or not. Either productive capital, stock of productive capital, it should increase. Size of supportive service, it should increase. Efficiency of productive capital or efficiency of supportive service, that should increase. So this is known as economic growth. And the best indicator to judge it, the best indicator to judge this is, that is GDP. That is GDP. GDP means gross domestic product. And what's gross domestic product? It is nothing, very simple. It is market value of all goods and services produced in a country in 1 year. यानी एक साल में किसी भी मुल्क में गुड्स और सर्विसेज, जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, उनका जो मार्केट वैल्यू होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज नोन एज जीडीपी. तो जीडीपी इज द बेस्ट इंडिकेटर टू चेक इकोनॉमिक growth. If there is increase in GDP, then it will be said there is economic growth. If there is no increase, then how can we say there is economic growth? No, then it's not economic growth. Then it is stagnation. तो ये इस ग्रोथ में एक और चीज़ भी है, इसका एक स्ट्रक्चरल कंपोजिशन होता है. स्ट्रक्चरल कंपोजिशन का मतलब यानी ये जो जीडीपी है, इस जीडीपी को कंट्रीब्यूट एग्रीकल्चर भी करता है, इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कंट्रीब्यूट करता है, और जीडीपी को सर्विस सेक्टर भी कंट्रीब्यूट करता है. सर्विस सेक्टर. देयर आर 3 सेक्टर्स इन एवरी इकोनॉमी. नंबर 1 प्राइमरी सेक्टर, आल्सो नोन एज एग्रीकल्चरल सेक्टर. Secondary sector, also known as industrial sector. Tertiary sector, also known as service sector. तो ये तीनों सेक्टर्स जो हैं, these contribute towards GDP. अब जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, वहाँ पे मैक्सिमम शेयर एग्रीकल्चर का होता है. In underdeveloped countries, maximum share or maximum contribution to GDP is due to agriculture. जिन कंट्रीज में डेवलपमेंट थोड़ी बहुत किसी हद तक होती है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में ज़्यादा होता है. अब जो हाईली डेवलप्ड हुआ करती है, हाईली डेवलप्ड कंट्रीज, वहाँ पे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन थर्ड सेक्टर, दैट इज सर्विस सेक्टर, इसकी होती है. तो इस तरह से ये स्ट्रक्चरल कंपोजिशन जीडीपी की है. इससे भी पता चलता है कि ग्रोथ का क्या हाल है. सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रोथ, विच वाज द फर्स्ट गोल ऑफ 5-year plans. Second goal, modernization. This is modernization, second goal. Modernization simply ये क्या है? It is
to adopt technology, to adopt modern or new technology in production. That's modernization. तो क्यों ये करना चाहिए? Why it should be done? Why we should modernize our agricultural sector, our industrial sector? ये क्यों हमें करना चाहिए? इसलिए इससे हमारी जो प्रोडक्शन होती है, we can increase our production. हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं. That's why we should have modernization. We should adopt new technology in our all sectors. जब एक फार्मर अच्छे सीड्स का इस्तेमाल करेगा, फर्टिलाइजर्स जो हाईली रैंकड होंगे उनका इस्तेमाल करेगा, मशीनरी का इस्तेमाल करेगा, तब जो उसकी प्रोडक्शन होगी दैट विल इंक्रीज, वो तो इंक्रीज होगा. इसी तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर न्यू मशीन्स को, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन जो होगा दैट विल बी गुड. क्वालिटी विल बी इंक्रीज्ड, कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड. These are the all allied benefits which one can get from modernization. So the second future or the second goal of fire planning, that was modernization, to have modernization in all our sectors in order to promote our economy. ठीक. Third one was self-reliance. This is also an important thing. Self-reliance, self-reliant यानी अपने आप पर ही भरोसा होना, किसी और पर डिपेंड नहीं होना, यह मतलब है सेल्फ-रिलायंस का. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, दिस कैन बी डन बाय यूजिंग ओन रिसोर्सेज, बाय यूजिंग ओन रिसोर्सेज यानी अपने रिसोर्सेज जो कंट्री नेशन में होते हैं उनका जब इस्तेमाल किया जाएगा, व्हेन दोज रिसोर्सेज आर यूज्ड, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी अचीव्ड. लेकिन इसके साथ साथ अगर रिसोर्सेज को इंपोर्ट भी किया जाएगा, किसी और कंट्री से भी रिसोर्सेज को लिया जाएगा, तब भी इकोनॉमिक प्रमोशन, ग्रोथ और डेवलपमेंट हासिल हो सकता है. What was done in our India? This one method was adopted, own resources. To use own resources, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाएगा ताकि फॉरेन डिपेंडेंस को कम किया जाएगा. जब फॉरेन डिपेंडेंस को कम किया जाएगा, वो कंट्री जो अभी ताज़ा फॉरेन कंट्रोल से, फॉरेन पावर से आज़ाद हुई है, इट वाज बेटर फॉर दैट कंट्री टू बी सेल्फ रिलायंट, पर्टिकुलरली इन प्राइमरी गुड्स, फूड आइटम्स एंड अदर प्राइमरी गुड्स. इनमें सेल्फ रिलायंट होना, फॉरेन डिपेंडेंस से अलग होना, इट वाज a good decision and it was done by our Indian leaders at that very time. तो इस इंपोर्ट को, उन चीज़ों को जिनको अंदर ही इंटरनल सेक्टर में ही प्रोड्यूस करना मुमकिन था, उनके लिए इंपोर्ट करना बिल्कुल बंद किया गया. उनके लिए इंपोर्ट करना रिजेक्ट किया गया, इसको नहीं माना गया. तो इस पॉलिसी से हम सेल्फ रिलायंट भी हो गए और फॉरेन डिपेंडेंसी हमारी कम हो गई. जब फॉरेन डिपेंडेंसी कम होती है, इट इज ऑटोमेटिक रिजल्ट इज फॉरेन इंटरवेंशन इन पॉलिसीज वो भी कम या ख़त्म होगी. सो दिस वाज सेल्फ रिलायंस, द थर्ड गोल ऑफ फॉरेन these 5-year plans. And the last one was equity. Equity means equal distribution of wealth. If in any economy there will be economic growth, and it is possible there will be economic growth
economic development, there will be much wealth, but with that standard of living जो है, standard of living, it can be not of high rank, ये high rank का नहीं होगा. इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, रिचनेस होगी, लेकिन जनरली जब देखा जाएगा दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन को जब देखा जाएगा दैट विल नॉट बी ऑफ हाई स्टैंडर्ड, उसकी स्टैंडर्ड अच्छा, उसका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होगा. वाई? व्हाट कैन बी द रीजन? रीजन कैन बी इन सच ए सिचुएशन this one, that is there will not be equity then. वहाँ पे फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं होगी. अगर इकोनॉमी में वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तो फिर वेल्थ ये जमा हो जाएगी इन फ्यू हैंड्स. देयर विल बी सम पीपल विच विल बी very very rich, but general people, many people living in the country, they will be similarly very poor. Their standard of life, that will be of low standard अगर equal distribution economy में नहीं होगा. तो लिहाजा it's very important that there should be equity or there should be equal distribution of wealth in an economy to have good standard of living, जहाँ सब लोग अच्छे हों, सब लोग खुश हों. यह तब मुमकिन है जब वेल्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. तो इसलिए फायर प्लानिंग का जो फोर्थ गोल था दैट वाज इक्विटी. सो दीज वर द 4 प्राइमरी गोल्स ऑफ आवर फायर प्लानिंग: ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी. तो अब पहले 7 फायर प्लानर्स जो थे फ्रॉम 1950 टू 1990, अब इनका इन्फ्लुएंस क्या हुआ, इसमें हमने अचीव किस चीज़ को किया, हमारी इकोनॉमी की जो लेवल थी उसको हमने कहाँ पहुँचा दिया. दिस ऑल वी विल लर्न इन नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह. सो टिल दैट, थैंक्स फॉर वाचिंग and remain in touch with these classes. You will get all this knowledge which will help you in your 11th class examination as well as in other competitive exams where economic part is involved. Thanks.